हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है तमाम चॉकलेट लवर्स के लिए, क्योंकि आज हम आपको स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी और वन ऑफ द मोस्ट फेमस चॉकलेट फैक्ट्री और म्यूजियम दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, जो कि फ्रीबुर्ग कैंटन में वाक़ है। और अभी वी आर जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे। वी स्टॉप्ड बाय टू शो यू गाइस द ब्यूटीफुल सीनरी बिहाइंड अस। सो इफ यू गाइस वांट टू सी मोर, कीप वाचिंग। So here we are at Maison Cailler और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है बहुत अच्छी। और ये सारा एंड पे आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एंड तक, ये सब इनकी फैक्ट्री है और म्यूजियम की एंट्रेंस फ्रंट से है। और साथ बाहर इनका एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। That's the main entrance. Come on, Mohammed. That's the counter from where you can get the tickets, and on my right is the gift shop. Little house. They currently have a 50% sale going on. There's more. Some more chocolates. These are all the gift packs. We have some more here. 50% off. And then this full wall, all the chocolate, different varieties है यहाँ पे। ये सिंपल मिल्क चॉकलेट है, one with the nuts, hazelnuts, some the almonds, hazelnuts again. That's dark chocolate. This one is my favorite, milk chocolate with honey. That's cocoa powder. You can use it for baking and for hot chocolate and stuff. Some mugs, some other things. There are the aprons, coffee mugs. One with hazelnuts, milk chocolate,
and dark chocolate. ये वाली जो चॉकलेट है सब ये आपको जो नॉर्मल रूटीन के ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ से नहीं मिलती, ये सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है। These are the cocoa beans. You can actually make your own chocolate bars. और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं, जैसे भी डेकोरेट करना है आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड की फेमस बेल्स आ गई हैं जो कि अच्छी लग रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनका भी मैं क्लिप ले लूँ। और ये सेल पर्पस के लिए नहीं है, ये वैसे डेकोरेशन के लिए रखी है उन्होंने। और ये कुछ और वुडन ट्रक्स हैं, कार्स हैं काये की। और इसके बाद अब हमारी टर्न आ गई है। ये टिकट है, इसकी प्राइस है 15 फ्रैंक्स पर हेड। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक गाइड है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। और यहाँ से प्रॉपर इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है ब्रांड का। 1819 में फ्रांसवा लुइस काये ने इसको शुरू किया था, इस ब्रांड को अपनी वाइफ के साथ, और बिल्कुल छोटी सी जगह से शुरू किया था। और उसके बाद लेटर ऑन उनके दो पार्टनर्स उनके साथ आ गए थे, कोहलर और पीटर। और उसके बाद 1929 में नेस्ले ने इस ब्रांड को खरीद लिया था। और साथ ही ये स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खूबसूरत सीनरी पेंट की है उन्होंने। पहाड़ हैं, काउज हैं, दरख्त हैं, माउंटेन्स हैं, बर्फ में घिरी हुई, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब हम नेक्स्ट रूम में आ गए हैं। और उस वक्त जब ये ब्रांड शुरू हुआ था तब जो मशीनरी यूज होती थी चॉकलेट की प्रोडक्शन के लिए, चॉकलेट की रैपिंग के लिए, वो सब इस रूम में रखी हुई है। अब हम आ गए हैं म्यूजियम के सेकंड सेक्शन में। और यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं चॉकलेट की प्रोडक्शन के लिए, उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन थी कि उनका ओरिजिन क्या है। और साथ ही इस रूम में तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो रॉ फॉर्म में रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, इवन टेस्ट भी कर सकते हैं। ये कोको बीन्स हैं जो कि रॉ फॉर्म में यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके बाद ये वाइट वाली, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स वनीला, इट स्मेल्स लाइक वनीला, सो दैट्स दैट। इसके बाद नेक्स्ट ये हेजलनट्स हैं, यू कैन ईट देम, ट्राई देम, व्हाटएवर यू लाइक। और इसके बाद ये लास्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड्स, बादाम है यहाँ पे सब।
दिया हुआ है कि किस टाइप की चॉकलेट में क्या रेशो है इंग्रेडिएंट्स की। ये है आई थिंक मिल्क चॉकलेट, ये मिल्क की रेशो है, देन कोको बटर और शुगर, और ये नीचे मिल्क चॉकलेट बार भी है। नेक्स्ट वन इज वाइट चॉकलेट, दैट्स पाउडर मिल्क, कोको बटर, शुगर एंड दैट्स वाइट चॉकलेट बार। और ये है डार्क चॉकलेट, इसमें दूध नहीं डलता, कोको है, कोको बटर, शुगर एंड दैट्स द चॉकलेट बार। और ये सब तीनों उसके बाद यहाँ पे ये लाइव चॉकलेट बन रही है, ब्रांच जो कि काइये की बहुत फेमस चॉकलेट है। These are the chocolate bars। यहाँ पे ये सब टेम्परेचर की इंफो है। They use 2.1 billion cocoa beans per year and 600,000 liters of milk per month, और उससे बनती हैं 90 मिनी ब्रांच पर मिनट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन लाइन। ओके, और यहाँ से ये बिग चॉकलेट बार्स को छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। यहाँ पे चॉकलेट के साथ ग्लेज कर रहे हैं इनको, छोटे पीसेस को, एज यू गाइस कैन सी। These are the chocolates। This is the cooling tunnel। चॉकलेट्स पैक होके यहाँ से वहाँ पे जा रही हैं। हाउ कूल इज दैट। और उसके बाद यहाँ पे जो चॉकलेट्स वहाँ पे बनी है वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं टेस्ट टेस्टिंग के लिए। ना Ah oui, c'est tout bon, merci. Voilà. Wow, smile. यहाँ पे अब कुछ और चॉकलेट बन रही है, और ये आर्टिस्टिक चॉकलेट है। और ये जो लेडी है ये पेंगुइन की शेप का मोल्ड है, उसमें ब्रश के साथ चॉकलेट लगा रही हैं, उसको बना रही हैं। और पेंगुइन के अलावा और भी बहुत सी शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये अब उन्होंने रख दिया है इसको ड्राई करने के लिए। और एज यू गाइस कैन सी काउस की शेप है, वाइट चॉकलेट भी है, पीछे मिल्क चॉकलेट है। और ये जो चॉकलेट पैक हो गई है अब इसको यहाँ से ले जाके डिस्प्ले कर देंगे गिफ्ट शॉप में। ये कुछ और पेंगुइन्स हैं, कुछ स्टार्स की शेप है, और ये एक और स्कल्पचर आ गया, ये भी सब चॉकलेट से बना हुआ है। So that's when it all started in 1819. It's been 200 years.
वक्त पे जैसी जो पैकिंग थी चॉकलेट की, ये सब वो उन्होंने फ्रेम करके लगाई हैं। एंड चॉकलेट्स 1950s. These are the molds, I guess. Yeah. Now the last and the best part of the visit. We are here for taste testing now. That's all the chocolate. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, ये चॉकलेट है ग्लास क्यूब में, और उस चॉकलेट को बनाने के लिए जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो सब उन्होंने इस क्यूब में रखे हैं। That's the chocolate. ये भी मिल्क चॉकलेट है with hazelnuts. 200 years of Cailler. That's another variety, milk chocolate with hazelnuts and almonds. Now that is dark chocolate with caramel. ये caramel है raw form में, I guess. And take it. This one looks really pretty. ये सब अब गिफ्ट सेट्स हैं। ये white chocolate है with almonds and hazelnuts. That's the last one, dark chocolate. और ये चॉकलेट से बना हुआ मॉडल है मेज़ों काइयर का। So pretty. That's me right there having some chocolate. Or you can eat as many chocolate as you want. There is no limit. यहाँ पे कुछ चॉकलेट मेकिंग के कोर्सेज भी होते हैं और बच्चे भी हैं यहाँ पे, बड़े भी हैं जो चॉकलेट बनाना सीख रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस विजिट के प्राइस में शामिल नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। यहाँ पे फोटो बूथ भी है। यू पे 5-6 francs for one picture, और डिफरेंट टेम्पलेट से आप चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द वन we got, and the other one? Is it Muhammad? That's Muhammad. आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मेज़ों काइयर की वेबसाइट और तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, अगर किसी ने देखना है तो वो देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।